Okay, students, so let's start to solve the business mathematics paper 2010 ICOM 1 Federal Board of Intermediate and Secondary Education. First question is about the MCQs. First one is gain from a TV set of rupees 4,000 sold at the profit of 20% is gain is 800, 20% of 4,800. A ratio can be reduced to its lowest or simplest form. Correct option is B. Every percentage can be converted into decimal, fraction, ratio, proportion, both A and B. A and B is a correct option. Commission on the deal is rupees 6,000 at 3%. What is the amount of deal? So here commission is 6,000 and it is the 3%. So this 6,000 is 3 equal parts. So if we know the one equal part, we can multiply with 100 to get the amount. So 6,000 divided by 3 multiplied by 100, 200,000. Correct option. At what simple interest rate an amount triples itself in 6 years? Correct option is 33 1 by 3%. To solve this, you must know the formula of simple interest or formula of future value of simple interest. Formula for simple interest is PIR or PRN or PIN, and formula for amount of simple interest under the condition of simple interest is equals to P multiplied by 1 plus IN, and correct option is C. Objective 6, if function of x equals to 1 over x minus 5, then h of 5 will be infinite function. Ax plus by plus c equals to 0 is the linear equation in the variable x and y. Number of rows and number of columns may or may not be equal. The inverse of matrix 3, 6, 7, 14 is singular, then x is equals to none of these, because 14 multiplied by 3 minus 6 multiplied by 3 is a singular matrix. So in case of singular matrix, we cannot find x. While converting a binary fraction 101.1, the 0.1 is converted into, correct option is B. ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर के पॉइंट के बाद जो नंबर होता है हम उसकी पावर को माइनस से लेना शुरू करते हैं. तो पॉइंट के बाद चूंकि एक नंबर है तो इसकी पावर आएगी -1. सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days in hotel cost rupees 6720, find the cost of stay of 8 men for 14 days. सबसे पहला काम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना. पहला वेरिएबल men, फिर डेज, फिर कॉस्ट. और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उस वेरिएबल को हमेशा राइट साइड के ऊपर रखें या लेफ्ट साइड के ऊपर रखें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि जो वेरिएबल मिसिंग है. सो द वेरिएबल विच इज मिसिंग इज कॉस्ट. So we take variable cost at the extreme right side. After that, just put the data. If the stay of 12 men, 28 days, cost 6720, 6720, find the cost which is missing, x, of 8 men for 14 days. अब second step जो है इसके अंदर ये है कि आप 1 by 1 रिलेशनशिप देखें इस मिसिंग वेरिएबल के साथ. अगर आदमी ज्यादा होंगे तो कॉस्ट कम होगी या ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा होगी. अगर एक होटल के अंदर ज्यादा बंदे स्टे करेंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी. तो ये पॉजिटिव रिलेशन है. तो पॉजिटिव रिलेशन को हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं करते बल्कि वैसे ही लिख देते हैं. तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इन केस ऑफ पॉजिटिव रिलेशन.
Now we take this variable constant and this can be taken as variable. अगर ज़्यादा दिन होंगे, if there are more days stayed in a hotel, then cost will be maximized or minimized. Obviously maximized, बढ़ेगी cost. तो ये भी positive relation है. Then we will not interchange this order and simply write 28 by 14 और ये तो आएगा ही ऐसे. अब ये ऊपर वालों को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये नीचे वालों को ऊपर वाले के साथ. Then 28 multiplied by 12 multiplied by x and 8 multiplied by 14 multiplied by 6720. And after solving, answer is 2240. Question number 2. If the 16% increase in the basic salary of a government employee will become rupees 3248 per month, what is his salary before the increase? तो first of all हमें after increase 16% increase के बाद सैलरी बन जाती है 3248. तो इट मीन्स ये 3248 जो है ये इक्वल 100 इक्वल प्रोपोर्शंस नहीं है, बल्कि ये 116 100 represents the basic salary and 16 represents the increase. So this 3248 is equals to 116 equal portions. So if we know about the one portion, we just simply multiply with 100 and to get the basic salary, and answer is 2800. Question number 3. Three partners invested rupees 18,000, 16,500 and 12,500 respectively. When profit was distributed to the third one, got rupees 4625. Find the total profit earned. And there is a question part B. At what rate rupees 5,000 will be doubled in 5 years? We will see later this, but first of all we will calculate part A of the question. So we will have to see about their investments. A की इन्वेस्टमेंट है 18,000, B की 16,500 एंड C की 12,500 और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो है 36, 33 और 25. कोई एक ऐसा टेबल आप तलाश करेंगे जो कि इन तीनों के ऊपर जाए. तो इन तीनों को हमने मजीद रिड्यूस कर लिया 36, 33, 25. इससे ज़्यादा मजीद ये रिड्यूस नहीं हो सकते. कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इन तीनों के ऊपर जाए. तो अब हमारे पास इन तीनों की जो रेशियो है वो ये बन जाएगी 36, 33, 25 और इनका जो सम है वो बन जाएगा 94. यानी कि टोटल 94 इक्वल प्रोपोर्शंस हैं, इक्वल हिस्से हैं, जिसमें से 36 पहले के हैं और यू कैन से A, 33 represents the ratio of B and 25 represents the ratio of C. अब इनकी जो प्रॉफिट है, जो C को मिला है प्रॉफिट, वो है 4625. तो इट मींस कि ये 4625 25 इक्वल हिस्से हैं. तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास एक हिस्सा आ जाएगा और इस एक हिस्से को अगर हम इन टोटल हिस्सों से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल प्रॉफिट मालूम हो जाएगा. सो 185 after dividing 4625 equals to 185, it will be multiplied by 94 and total profit will be 17390. Now we come to the part B of the question. At what rate rupees 5,000 will be doubled in 5 years? 5,000 represents the present value or principal amount. If it doubles in 5 years, then it means this investment earned 5,000 rupees simple interest. क्योंकि हम जिस वक्त 5,000 सिंपल इंटरेस्ट को 5,000 प्रिंसिपल के अंदर ऐड करेंगे तो ये 10,000 फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी. तो इट मींस प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000, फ्यूचर वैल्यू इसकी है 10,000
और सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि वो है 5000 और n आ गया इसके अंदर 5। P 5000, अमाउंट 10,000 और फ्यूचर वैल्यू भी आप कह सकते हैं इक्वल्स टू 10,000, n इक्वल्स टू 5 और I हमने मालूम करना है। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, और आप फ्यूचर वैल्यू का भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में ये सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PIN, सिंपल इंटरेस्ट है 5000 और प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 मल्टीप्लाई बाय I हमने मालूम करना है, और n जो है वो है 5 इयर्स। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 25,000, 25,000 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका टोटल 0.2, और 0.2 जो है ये फ्रैक्शन के अंदर है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर 5000 विल बी डबल्ड इन 5 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वल्स टू 5 + 2x - x स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स -1, 2x रिप्रेजेंट्स b इक्वल्स टू 2 एंड 5 कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स c इक्वल्स टू 5। सिंस ये जो फर्स्ट वन है is equals less than 0, so parabola opens downward. The vertex will therefore be the maximum point. Vertex is always equals to minus b over 2a. So b equals to 2, to minus 2 divided by 2 multiplied by -1. Finally, it is equals to 1. And now function of x is minus x square plus 2x plus 5. First of all, हम 1 को पुट करेंगे, और 1 पुट करने के बाद जो फंक्शन ऑफ 1 है ये बराबर है 6 के। Thus the vertex is at 1 and 6. Letting x equals to 0, अगर हम 0 को लें तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। सिंपली x के अंदर 0 को पुट करें तो ये आ जाएगा 5, और हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए, 0 एंड 5। सिमिलरली एक दफ़ा आप 2 को पुट करके देख लें, तो x की जगह पे 2 को पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग दिस ये बराबर आ जाएगा 5 के। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे 2 एंड 5, तो 3 आ गए 1 6 0 5 एंड 2 5, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। Move to the question number 5. A manufacturer produces items at spending 75 paisa per item daily and sells them for ₹1 per item. His daily operational cost is ₹300. What is the break-even point? Graph your result. सबसे पहले तो रेवेन्यू फंक्शन जो है, रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय Q के, और कॉस्ट फंक्शन जो है ये दोनों, कॉस्ट फंक्शन जो है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू फंक्शन है, यहाँ पे आप Q की जगह X भी पुट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन इज P मल्टीप्लाई बाय X। तो व्हाट इज द प्राइस? sells them for ₹1, so 1 is the price, so revenue function will be 1x, and जो कॉस्ट फंक्शन है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके साथ आपने x नहीं लगाना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आउटपुट। सो 300 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 75 पैसा, सो 0.75x, it is the cost function. As we know that a break-even point firm gets zero profit. So profit जो है ये हमेशा बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के, और ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है वेयर प्रॉफिट इज जीरो। सो सबसे पहले तो हम फंक्शन इसका लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और हमने ये पुट कर दी वैल्यूज। हमेशा याद रखें कॉस्ट फंक्शन मस्ट बी रिटन इन ब्रैकेट्स। व्हेन वी ओपन इट द साइन विल बी चेंज। Our profit in break even is 0,
So after arranging this equation, 0.25x equals to 300 and x will be equals to 1200 units. Now put x units 1200 in revenue and cost function. Revenue will be 1200 and cost will be 1200. So it is the proof that at 1200 units production, profit will be 0. So it is the break-even point, and we can graph this. You can pause the video and see the graph. We move to the next question. Solve x minus 2, 3x minus 2, x plus 1 plus x, and so on. So, sorry, x minus 2. Okay. This question is missing to solve, I think. So, okay, we now move to the 7th question, that y square over 2 minus y by 6 equals to 1 by 12. Simply multiply both sides by 12. हम इसको डिवीजन के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, सो हम तमाम इस इक्वेशन के तमाम एलिमेंट्स को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 12 एंड 12 के साथ ख़त्म हो गया. सो it will become 6y square minus 2y equals to 1, 6y square minus 2y minus 1 equals to 0, and finally this will be equals to quadratic equation will be applied here. So a will be 6 and b will be minus 2 and c will be minus 1. So after putting the values into the quadratic equation, 0.6084 and minus 0.275. Move to the question number 8. Find inverse of the following matrix. Matrix A is 4976 and B is 1001. So inverse is always equals to adjoint divided by determinant. In adjoint, we just replace these two elements with each other and change the signs of these two elements. So 6, 4 and plus 9 will become minus 9, plus 7 will become minus 7. This is equals to adjoint. And in determinant, we simply multiply these two and subtract the result from the multiplication of these two. So 4 multiplied by 6 minus 9 multiplied by 7. So it will be equals to minus 39. And finally, it will become minus 1 by 39 multiplied by 6 minus 9 minus 7 and 4. So it is equals to the inverse. So in similarly, we can take the inverse of 1, 0 and 0, 1. First of all, we take the adjoint, and after that we will take the determinant of that matrix, and that will be equals to inverse of A. Find the determinant of the following matrix and explain whether it is a singular or non-singular matrix. It is same question as it is asked in above question number 8. So we are going to take determinant simply 4 multiplied by 2 minus 3 multiplied by minus 4. It will be equals to minus 4, and it is a non-singular matrix because in singular matrix determinant is always 0. Question number 10 is solve the following equation by Krama rule. 2x minus 6y equals to minus 12, 3x minus 2y equals to minus 4. So first of all, we will have to create the matrix. Matrix will be 2, minus 6, 3, minus 2, xy, and minus 12 and 4. Here in Krama rule, we need 3 different types of determinant. Determinant of A, determinant of AX, and determinant of AY. And the way to calculate determinant is same as we discussed in the question number 8 and 9. So first of all, determinant of A will be 2 multiplied by minus 2 minus minus 6 multiplied by 3, and that will be equals to 14.
Now we take this column and place here and take the determinant, that will be equals to AX determinant. So minus 12 multiplied by minus 2 minus 6 multiplied by minus 4. So it will be equals to 48. Similarly, we take this column and place here and take the determinant. So 2 multiplied by minus 4 minus 12 multiplied by 3, and it will be equals to 28. And simply put these three results into the formula. X equals to AX determinant over A determinant, and Y equals to A determinant over A determinant. So X is 3.429 and Y equals to 2. Question number 11 is about the binary operation. So solution is given here, but mind it, बाइनरी को सॉल्व करने के लिए आपको चार बिजनेस जो बाइनरी अर्थमेटिक्स हैं प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो आपको ज़रूर आने चाहिए और उसकी एक मखसूस प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी चाहिए. बट यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है इसके, तो इसे आप देख के सॉल्व कर सकते हैं. सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3, if part A, if the price of 50 ready-made shirts is rupees 3652, then what is the price of 85 such shirts? Very simple. We need here the price of one shirt, then we will multiply with 85 and we can get the answer. So price of one shirt is simply 3652 divided by 50 is 73.04. Then we will multiply with 85 and answer will be 6208.4. And solution B, if ratio of cars and trucks is 7:2 and there are 26 trucks, how many cars are there? Very simple. फर्स्ट ऑर्डर को जरूर देखें. पहले कार्स है तो कार की रेशियो है 7, ट्रक्स की रेशियो है 2 एंड सम is simply 7 plus 2 9 and there are 26 trucks. It means यहाँ पे ये दूसरा मेथड भी यूज हुआ हुआ है, लेकिन इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. ये 9 टोटल इसके इक्वल प्रोपोर्शंस हैं और सम ऑफ रेशियो 9 है. 26 जो है ये रिप्रेजेंट्स करता है 2 इक्वल पार्ट्स को. देन 26 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और आप बड़ी आसानी से कार्स का नंबर मालूम कर सकते हैं. बट हियर इसका फुल फ्लेज मेथड भी गिवन है हियर, तो आप इधर से भी इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. Question number 4, part A, find the value of motor car costing rupees 2,50,000 at the end of 7 years. If depreciation at the rate of 7.1/2% is written off on the value at the commencement of each year. Or second one is convert into decimal 1001 and 111011. So first of all we will solve the part A. Find the value of motor car. Cost is 2,50,000. N is the time period is 7, interest rate is 7.1/2%, in fraction it is equals to 0.075. So there are two formulas to find value of the asset after n years. Depreciated value of the asset after n years is C minus ND, where C is cost, N is number of years past, and D is depreciation amount. Depreciation value of the asset after n years is equals to C multiplied 1 minus R raised to power n, where C is cost, R is the rate of depreciation, and N is the number of years past. According to available data, we will use second formula here, which is C multiplied by 1 minus R raised to power n. C is the cost, 2,50,000, multiplied by 1 minus interest rate, 1 minus 0.075 raised to power n. And after solving this, depreciated value of the asset after n years is 144,850. And now we move to the conversion of binary to decimal. So always when we convert the binary into decimal, we take a start from the extreme right. So 1 multiplied by 2 raised to power 0. We start here from the taking power of 0, then 1,
then 2, then 3. So 1 multiplied by 2 raised to power 0 plus 0 multiplied by 2 raised to power 1 plus 0 multiplied by 2 raised to power 2 and plus 1 multiplied by 2 raised to power 3. And after solving it, it is equals to 9. Binary number given is 111011. So simple method which is applied before will be applied once again here. So 1 multiplied by 2 raised to power 0 plus 1 multiplied by 2 raised to power 1 plus 0 multiplied by 2 raised to power 2, then take power 3, take power 4, take power 5 and just solve it, equals to 59. Question number 5 part A. What is the interest on rupees 188.0.90 for 1 year at 1 by 2% or 5.5%? First we solve the part A. Principal amount is 188.0.90 and N is 1 year. Interest rate is 5.5% or we can say 0.055. And what is the simple interest? Simply apply the values into the formula of simple interest, 103.4495. And part B is find the compound interest of principal amount rupees 50,000 at the rate of 5% for 3 by 4 years. It means this data is in the quarter form because this 3 by 4 represents the quarters. So we can say that 3 years and 3 quarters, and in 1 year there are 4 quarters. So 4 multiplied by 3, 12, and 12 plus 3 equals to 15 quarters. So N will be 15 and interest rate is 5% annual, but the case is in the form of quarterly based. So 5 divided by 4 equals to 1.25, and when we take the fraction of 1.25, it is equal to 0.0125. Interest rate is 0.0125. Principal amount is 50,000. Simply apply the formula of compound interest equals to P multiplied by 1 plus I raised to power N minus P. After putting the values into the formula, and you can solve, and compound interest will be 10240. So thank you once again, and I will come again soon with next paper.